there, so you will have a better understanding. So now we have a list with the dog name. Now I basically updated the second index, that is the name to ABC, and I printed it. So here we are. Another way can be if you think, okay, what I can do is dog age, and I basically keep on adding it here rather than adding it there. We have every index correspondingly telling us. So on 0th index, the name of the dog is Bruno. On the 0th index, in the dog age list, we have the age of Bruno, and similarly, it goes on, right? So now, then also, this value does not have a direct relation with this value. Now, if I were to change the value of basically here again also, if I were to change the value of Tuffy here, then earlier you would have known that Tuffy's age is 4. Now you would know, okay, ABC's age is 4. So it can basically, there is correlation of data with each other. So that is why we need classes, so that we can collate the data of a particular, collate the properties of a particular thing in a particular object. So by properties, what I mean is, so if let's say we have a dog, so I hope this is clear. And let's have a dog, and dog has multiple properties. Let's say name and age, and let's say basically height, something like that, right? So now, if I were to basically have an object of dog which has all these properties, so I am assigning all these properties to a particular dog object, right? So how do we do that? So basically, in order to, we need to have a class, right? So that is why we need classes. Right. So we can write class dog. So to write any class, you can basically just write class, and then you need to write a class name, and then semicolon, and you have defined a class. Now, before giving you any details more about it, how do we create a particular object? How can we create an object, right? Creation of object, one of the easiest way, or a lot of you guys who are in first year or second year, you might have heard of constructors. So constructor is one of the easiest way to create a object. So how we define constructors in Python is, we define it with the method. It is a method by Python that is called init. Uh, so basically, initialize it, and by defining this, we are initializing it. So now, if I am initializing it, now what we were discussing was, we want our dog to have a name, a age, a height. So whenever if I want to create an object, I need to provide these details, right? I need to provide the age, name, and all these things uh, method, so that we can have those values, right? So now I have provided these values. Now, even though we do have these values, how do we create a relation of these values with the class dog itself? Now, even if I pass these values in this method, basically, how do we make a relation? So I am saying in this class, so self is basically where you pass your values here. So you are assigning, in this class, you are saying create an object which has this name uh, and this age and this height. Okay. So now you have said that, okay, in this class, what I need to do is, if anybody gives me a name, age, or height, then you create an object of it like this. So creating an object means basically keeping all three values secured in a particular class. Okay. So now we have said that, okay, do this. So this is a simple example.
that we have done, right? So now what we need to do is, if I were to basically, I'll just comment this that you don't, so that we don't get that in the uh, basically output now. So now if you see, so this is our very simple class. Now, how do I create an object of it? So to create an object of it, it's very simple. Let's say I say the first dog, let's say Bruno, uh, because it is dynamic, like we told you yesterday. You can assign Bruno to one, you can assign Bruno to any string, you can assign Bruno to anything that you want. But in this particular case, what we want to do is we want to assign Bruno to a dog object. And how do you create that object? We are calling the dog class. Now, because we have this particular constructor, now it wants us to pass these values in it, right? So if I were to pass Bruno, for example, here, then if I were to pass 2 here, and then height, let's say 120, right? So now it will show you, okay, uh, we have created this object, right? Now, if I were to just print Bruno, see, you will print the class. Yes. So if I were to just run it, class object. So here you will see it has created an object of it, right? Now, you guys will be wondering, how do I access it? Now, we can access every method, basically every variable, every property that you have defined for that particular object. You can access it using dot and that property name. Okay. Similarly, if I were to print all the values, then you will see, if I were to just print it, you will see 2 Bruno and 120. So now all of these are in a object. All of these are combined to make a dog object. So now Bruno is a dog object. You can access the age, name, height of anything from Bruno. But uh, there can be some things. Let's say if I were to give you an example, if I were to give a simple example, let's say if someone asks you your date of birth, and you tell them your date of birth, they will calculate what is your age, right? And they can exactly pinpoint, yeah, like you are 10 years, 2 months, and whatnot, right? Now, if I were to say that you don't, I don't want कि my date of birth should be shared with anyone, मेरी date of birth किसी के पास नहीं जानी चाहिए, but मुझे एज का पता लगना चाहिए कि ओके एज क्या है, राइट? तो what we can do is, so how do we achieve that, कि कुछ चीजें, तो अभी हम यहाँ पे सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हों जो कोई भी एक्सेस ना कर पाए, राइट? कोई भी आए और डायरेक्टली एक्सेस ना कर ले. सो इन C++ or Java, if you guys have read, so you basically have a modifier, right? Like public, private. So you define these things. How do you make a variable private? How do you make a variable public? So private variables, then you use getter setters to basically get the value, set the values, right? So same thing, private basically variables. How do we achieve that here? So if I give you if I make the changes in the same example and I just place 2 underscores here under the age. So you will see before I placed it, you will see there was no yellow line that was showing you, okay, there is something wrong, right? Something like that. Now if I put just 2 underscores here, it will kind of show you, okay, it is saying unresolved attributes. It means it is not able to find it because we have made it private. So how do you make a variable private in Python? You just put 2 underscores before it and it is private. Okay. So now if I were to make an object again, obviously there is no issue. There is no, I can just print that Bruno and you will see same that object is created, dog object is there, right? And if I were to access the name, height, no issues, you can directly access the name and height, no worries.
Now, if I were to basically access the age, now how do I do that? First of all, uh, you guys will say, okay, it is underscore underscore age. You cannot. You were using dot a. That's why it was not working. So if I use underscore underscore, it says no. If I remove underscore underscore, then again run it, it will say no. There is no variable age. There is no variable underscore underscore age. Now, still, now I do want key. Okay, just to so that it is comparatively easy to understand. So let's say it's date of birth, right? And its date of birth and its date of birth. Now, still, I want with the date of birth present, I should be able to get the age. There should no restriction for me to find the age. So if I say age here, and this self means the object itself. So we now when we initiate it, basically we pass the values in a constructor. We defined all the values here using this. Now in what we did was self this. Now if I create any other method. So first of all, one thing, class you define it with the class variable, and methods, if you see, Python itself has given us a syntax. So this is a constructor where also you define, okay, how do you define the method? You type a DEF and you basically pass underscore underscore, and so this method itself is a private method. So you cannot directly access this method. So how do you access that? You just create a constructor using this, and these values automatically get passed here. And then in this method, you have that object. You have control of that object. What you can do is you can do any number of operations. Let's say if I want to make a operation, let's say self dot underscore underscore dob and plus one. I want to return it. So earlier, we were not able to access the age. Sorry, if I were to use this example, date of birth, not right. Directly, we were not able to do it, right? Underscore underscore, if I pass, then also I'm not able to do it. Now, I have date of birth, but I don't want you to have access to it. I don't want you to know my date of birth, but I am okay with you knowing my age. I don't want you to know the exact date of birth, but I'm okay with you knowing the age, right? So if I just call age here, now what it will happen is it will show you date of birth we have passed to, we added one to it. So how is it working now? So private methods, private variables. So this is a private variable. We pass underscore underscore here. So we cannot directly access it, but another function, another method that is written in the same class, they can access that private variable. I hope that makes sense to you. So this is accessible here, but this is not accessible directly. So any variable that is public, so these are by default public, so you can directly access, and any variable that is private, you cannot directly access it, but you can basically write a method which is using that private object and returning you that. Then it is fine. Otherwise, you cannot do it directly. Now, if you were guys to see the similarities, that init also has underscore underscore in front. It we are also saying that private method have underscore underscore, so it is a private object. Now, if I were to define a private method, so how do I do that? So I can define a private method itself. Uh, calculate age. Okay, a little bit of mistake. Calculate age. Now
if I were to return anything from here, let's say same thing, if I want to return dob plus 1 plus 2, so that we don't have a confusion. Okay, so now if I were to call this particular method, what do you guys think? Should we be allowed to call this method? Uh, I hope not. Definitely we cannot call this because this method is private. So this is a private method. And because there is no underscore underscore, uh, so we can say this is a public method. Similarly, uh, if I were to just re-modify it, I can say hashtag public variables, and I can say hashtag private variables. So these are public variables, these are private variables, this is a public method, and this is a private method. Okay, so now I hope this is clear to you guys why we needed class, so that we have a relation of all the properties together at one place, and why we have created constructor. And earlier we saw a constructor with all the public values. Then we saw a constructor with a private value. And then we saw a constructor, basically a method which is public. Then we saw a method which is private. Now, to coming to the private method itself. Now, if I were to call directly this private method, I will not be able to, you will not itself see. Okay, I don't see it, but still I'm gonna go ahead and call this method like I was calling this age method, right? I'm just gonna go and call this method like this. And obviously I don't need to pass anything. So if I were to run this, it will say, okay, did you mean age underscore dog underscore underscore age? So it will ask you, did you mean this? Did you mean that? But still, you will not be able to access it, right? If I were to write calculate age, then also it will say, okay, there is nothing like that here. Now, if I cannot access it, what use do I have for it? Now, so let's say you have a very calculated logic here. You are doing some operations. You are doing, let's say, I'll just print some operations. Or if I were to do some operation, I'm saying that you multiply it by 2, then you basically add 2, and that's it. Or so I'm saying that here. Okay. So I'm saying that, okay, I'm doing some very calculation that I don't want anybody to know other than the class. So now, uh, how do we basically use this? Who will use this method? So any public method that is written here, they will use this method to return you the value of after the calculation. So earlier we had date of birth, but what we want is we want to, sorry, is we want to calculate age based on something. Now we can directly call that method. That method will do some computations that they want to do, and then they will return this value to this method, and this method will eventually return you the value. So I will call age. Age will call this calculate age, and then calculate age will basically return you this particular value. So this will get returned here. So if I were to make it easy for you guys, response uh, from here and response from there. So I called this method. So if I
You see, I called this method. You might be wondering that I'm not passing anything here, but self is here. So this is a class. So this is an object that is getting passed by class itself. You don't need to pass it. This will get automatically passed. Similarly, in it also, you will see self is there, but we are only passing three values because that is a class object. We don't need to do anything about it. Now we are doing calculate age here. So it will do print this, then do value this and return this. So it will return this value. This value will get stored here. And then we will do the response here. And in the age, we will see, okay. So as we already discussed, we cannot directly call this. So might well go ahead and call the age method. So if I call the age method here now and run it, you will see it is printing some operation. So that's why I made a print statement here so that you guys will see that it called this method, it did operation here, and then our initial value was 2, 2 into 2, 4, 4 plus 2, 6, and it returned the value there, and which eventually got returned by here, and we can see that, okay, uh, values are present here. So I hope that made sense to you. Now, I hope if you guys have any doubts, please ping in the sheet. We are responding to the doubts as we are going. So uh, you can basically ask your questions or any doubts there. So we will basically reply you. And we have replied to all of the doubts that you guys have asked yesterday. So I hope that makes sense. So now, just to so that I hope this all is clear, I'll just summarize it for you. We created a class. So why did we created a class? Because we wanted to basically have all the properties of a particular uh, thing in a particular object. We wanted to create an object with all these properties: name, date of birth, height, age, and whatnot. And then in a particular class itself, how do we create an object? This is how you create an object. And what is in it? In it is basically a constructor. So in Java or in C++, you might be having constructor if class and the constructor and the method has the same name, then it is a constructor. But in Python, it is not. In Python, it is defined like this. So you can basically create an object like this. Then we learned about how you create a private variable, how you create a public variable, how you create a private method, how you create a public method, how can what is the use case of private method. If you don't want anybody else to call this method directly, then obviously you need to make it private so that your class only can call this method and nobody else can call it. Now, if there is some method that you want everybody can call and get the response, then obviously it is a public method. Now, if I were to summarize it, so this is how you create a class, how you create an object, how you create variables, how you create methods in a particular class, right? Now, what is basically what is this property known as? So you all guys might have read it or you will read it in your coming years in college, that we have a property name encapsulation, right? So encapsulation means basically taking all the methods, all the variables, all the private variables, public variables, all these things in a particular class. So that is data encapsulation. So I'll not read you a bookish definition. Okay, this is encapsulation. And if you want, definitely, if you Google it, then you will find that building data methods into a single unit class and all that. Eventually, obviously, that is a uh, definition of it. But what is actually encapsulation? Whatever we have done, this is encapsulation. You created variables, you created methods, you created private methods, all of these in a single class. This is known as encapsulation basically. So, and now basically you have these abstraction and you have data hiding, all these things. So how do you
use data hiding. Data hiding. So doesn't that data hiding or abstraction seems a little familiar? Uh, Data hiding. We are hiding this data. We are not letting anybody else see this data. You cannot directly access it, but if you have a public method, then you can access it. You cannot directly access it. So we are hiding this data. You cannot use this data, right? Now, even if I want to do it on a let's say uh, on a level above, let's say if I want to create a hidden value, and I created this. Now, even if you have this, you created constructor, right? Using this, still you cannot go ahead and call that hidden value. You cannot call that value. But uh, I know you guys already know the answer. How you can access it? You pass it to a public method, and then you can definitely access it. So if I were to add this here, uh, underscore underscore and hidden value, then let's just add some value here so that you will see the response. So here we were calculating the age that was coming out to be. So 6. Now we added 10 there, and let's see the response. It's just a second. We are directly calling that method, calling that variable. We need to call the age. Okay. So here you see 16. So now what happened? We called age. What did it was? It called this method first. It called this method. It printed some operations here. It did some calculation. Calculation date of birth value is 2. 2 into 2, 4 plus 2, 6. It returned value 6 here. So this one returned you 6. This one we defined the value 10. So 10 plus 6, 16. That is the response that you're getting. So you can do it on a level above also, that you want to define it like this. Now, why do we define it there? We can do the same thing here also. So there can be sometimes uh, properties like self dot is alive. If I say is alive, that means is the dog alive? Then if I'm creating an entry in it, I definitely want it to be true. So this value itself is fixed. You are not going to change that. So that's why when we define this value above also, so these are fixed values. You don't need to pass anything into this function. This is a default value for every object you will create. So dog is alive. That is true for every dog that you are creating, right? So you can still have a hidden value here. Yeah. I hope that makes sense. You can have default values. How you can have a default value? You don't need to pass anything here, but still you can use it. Basically, you can pass it to a website. Now you can also access that because that is a public value. So if I were to check is alive, it will definitely show me true. So you can see it is showing me true, right? Because it is a public value and we can access it. We set it and it is a part of the object. All of these values are part of the object. So you can do it like that. Now, I'll just cover one more topic. Maybe it's not that much important, but still, I want you guys to know about it. So, what if I have a method? Okay, and what I do is print. Hey, I am a printer method. Now, this method is not accessing any of the okay dog printer method. Makes sense?
Then let's say this method is not using any of the properties that we have defined for a particular dog, right? This method is using those properties, right? It is using hidden value, it is doing self dot calculate age, and it here is using. So eventually it is using, right? Because it is calling this method, so it is using that value. So this method is using some values from the properties that we have defined. This method is using, right? Now this method is not using. So I can basically run this method. There is no issue in that. Bruno dot, let's say, what is the method's name? Bruno dot printer. Right. I can definitely call this method. I'll just comment this out so that you have clear visibility. Okay. So here it will say, okay. Okay. So we have a empty print statement. So one more thing. You have, you see, if you print and there is nothing in it, then you will get none. So just a, you know, bonus part here, that is you might be using null. You might have heard about null pointer exception. You might have seen it. So in Python, we replace everything with none. So null is not anything, but none is the word. So in C, if you go, you can directly write null and it is okay. So if I were to write string, it is null. In C, it will. So if I were to give you exact context, string s is equal to null. It will work in C. It will work in C++. But in Python, if you want to achieve the same thing, you will say null. Okay. I hope that makes sense to you guys. So coming back to the printer method that we were talking about. So now I'm calling a printer method. It is going to print, right? It is going to this printer method. It is printing, hey, I am a dog printer method, right? Now, if I don't need any of these values here, then what we can do is we can define this method as static method. Static method. Just a second. Just a second. I think we need to import it. But if I just a second. I think it's a small, like some syntax problem. Yeah, just a second. Yeah, this one. Yeah, syntax problem. But yeah. So if I remove this, you will see it is saying that okay, something is wrong with printer. So it is also giving you a Python or any other language. They will also give you example that saying that method printer may be static. Static means it is not using any of the values that any of the dog object will create. It is a method that does not require anything. That is a static method. So we can use a decorator here. So decorator, what are decorators? Decorators are methods only. So uh, this method will run before this method, something like this. Okay. So now we were passing self here, but we don't need to pass self in the printer method. And so maybe you guys will be concerned about how or what decorators are. We will definitely cover that part because currently decorator will not make much more sense to you at this point, but we will come to that topic later on so that at the point where you will have clear understanding what exactly a decorator is. But at this point, I just wanted you guys to understand what a static method is. Static method means basically you don't have any dynamic value. Dynamic value means any of the values that you used while creating a dog object affecting this method internally. This method will run basically without using any of the values. Okay. Yeah. So now you will also see still we are getting none here. You might be wondering why we're getting it. So if I were to just remove this print, you will see
we are getting only this value, right? I didn't remove it because I wanted, maybe you guys, maybe one of you guys have asked it, the question, but if you have not, I'll just tell you why it is happening. uh, so when we called this method, it went to this method, it ran this print statement, but it didn't return anything. Now this is finished. Once this is finished, this print is as good as empty, right? And what will happen if I run an empty print? It will print a null value, basically. So because it is passing none from here, it is printing that value. So I hope that makes sense to you. So moving forward, we will be covering inheritance, and we will be covering basically basically polymorphism. How do we do that? So Rajat is going to cover inheritance and polymorphism. So Rajat, Yep. please. Before that, Mohit, can you please explain them how to access that private method inside a public, like private variable inside a public method? Normal, I think there is a function dob, or yeah, I think anything This one, right? They want to access this just basically, I think this works. Like this hidden value is a private variable, but you are able to access this now. So just you have to explain this only. Okay. So guys, I think also like guys are like they all are asking if we can explain them in Hindi. okay. So हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है दिस ये वैल्यू या फिर ये डीओबी की जो वैल्यू है ये प्राइवेट है. अभी हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस इज ए प्राइवेट टू दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पब्लिक वैल्यूज हम सीधा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट प्राइवेट वैल्यूज हम सीधा यूज नहीं कर सकते. तो हाउ डू वी यूज दोज वैल्यूज? वी क्रिएट ए पब्लिक मेथड टू यूज दोज वैल्यूज. ओके. सो इफ यू रिलेटेड, अगर तुम लोगों ने जावा पढ़ी है कि जावा में अगर तुम प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना देते हो, प्राइवेट एक प्रॉपर्टी और प्राइवेट एक वेरिएबल बना देते हो, तो तुम लोग गेटर सेटर बनाते हो, राइट? यू यूज ए गेटर, यू यूज ए सेटर टू बेसिकली उसमें सेट करने के लिए, उसमें वैल्यू गेट करने के लिए. तो ये बिल्कुल उसके जैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर ऑन द सेम लाइंस. तो क्या है कि अब हम इस डीओबी मेथड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. तो अगर मैं जावा और सी और इन सब की तरह ही एक तुम्हें मेथड बताऊं कि गेट डीओबी, तो ये सेम लाइंस पे क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ से अब तुम्हें डीओबी रिटर्न कर सकता हूँ. पर अगर एक एक सोचने की बात ये है कि अगर मुझे यही ही करना है कि मैं एक गेट डीओबी का मेथड ही बना दे रहा हूँ कि तुम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू एक्सेस कर लो. जस्ट अ सेकेंड. DOP, and we are not calling that method. Just a second. तो अगर मुझे ये मेथड ही बना देना है जिसमें तुम डायरेक्टली डीओबी ही एक्सेस कर लो, तो इसको प्राइवेट बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना. मैं इसको प्राइवेट क्यों ही बनाऊंगा अगर मैं तुम्हें मेथड ही दे रहा हूँ जो तुम्हें डीओबी बना दे. प्राइवेट मुझे सिर्फ इसे इसलिए बनाना है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें डीओबी एग्जैक्टली मिले. मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें, अगर तुम मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो मैं तुम्हें एज बताऊंगा. आई विल नॉट टेल यू डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आई विल नॉट टेल यू. मैं तुम्हें एज कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एज क्या बनती है, बट डेट ऑफ बर्थ आई डोंट वांट टू टेल यू. ऑल्सो लाइक अ रीड ओनली प्रॉपर्टी बन जाएगी अभी ये तुम बस पढ़ सकते हो, यू कांट वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब दूसरी क्लास वाले हैं तो वो अपडेट भी नहीं कर पाएंगे उसका. So very good point. So if I were to let's say Bruno dot name, and if I were to, let's say, write something copy here. Now what do you think guys will happen? So if I were to print Bruno dot name here, okay, see, it is printing Tuffy. Now it updated that value by this name. So now I access this
dog object. I basically updated this value. Now अगर मुझे क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ भी करनी है, लेट्स से, तो मैं डेट ऑफ बर्थ कैसे करूंगा? आई कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इट। मुझे एक्सेस तो है नहीं कि मैं सीधा इसको कर सकूं। तो इससे क्या फायदा हुआ कि मैं, अगर मेरे को पता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरे डॉग का नाम चेंज करे, कोई मेरे डॉग का डेट ऑफ बर्थ चेंज करे, तो मैं क्या करूंगा, उन वेरिएबल्स को प्राइवेट बना दूंगा। तो कोई भी यहाँ आके डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता है, राइट? अगर वो चाहता है कि सिर्फ रीड एक्सेस चाहिए, यू कैन बेसिकली गिव देम दिस। पर अगर तुम चाहते हो कि वो अपडेट कर दे, देन दैट वेरिएबल शुड बी पब्लिक. So because name is public, you are able to use this and you are able to print it and you can see, okay, name is updated. Okay. But अब हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ इज ए प्राइवेट वेरिएबल. तुम उसको डायरेक्टली एक्सेस करके नहीं अपडेट कर सकते. तो सिमिलरली अब मैं यहाँ पे अगर नेम को, हाइट को, जो भी चीजें मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपडेट ना करे, उन्हें अगर यहाँ डाल दूँ प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर, तो कोई भी उन्हें अपडेट नहीं कर पाएगा. यू कैन क्रिएट ए ऑब्जेक्ट बट यू कैन नॉट अपडेट दैट ऑब्जेक्ट. सो बट यू कैन स्टिल हैव द फील्ड्स की जिसमें तुम्हें लगता है कि कोई भी अपडेट करे. सो लेट्स से नेम, हाइट और डेट ऑफ बर्थ, ऑब्वियसली ओनर विल पुट द करेक्ट वैल्यू. बट डॉग इज अलाइव और नॉट, वो वैल्यू कोई भी बता सकता है. लेट्स से अगर आज कोई डॉग मर गया, तो कोई भी आगे कह सकता है कि हाँ डॉग मर गया, लेट्स मेक दिस वैल्यू फॉल्स. अब इस वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, तो ही कैन मेक दैट वैल्यू फॉल्स, बट अदर वैल्यूज नेम, हाइट और डेट ऑफ बर्थ ही विल नॉट बी एबल टू चेंज. तो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू गाइस. I think like we can start with the laptop Yes. also. Yeah, I think we can change the sides. Yeah. It'll be good. Oh, hi guys. So just 1 minute. Now we can. So more, like it was a good session. With I've seen like people are getting things also, and they're getting good questions also in the slide only. Other folks also are like आप भी मतलब उसमें लिंक में पूछ सकते क्वेश्चन. So Mohit will be answering questions side by side, and we'll try to make this session properly more interactive. Okay. So he has all मोहित ने काफी अच्छा कवर किया है about classes definition, like how we define a function, and how we define a private variable, how we define a public variable, when private variable is used, why we not use private variables, or basically yes, like why we should use private variables actually, and when we are using okay. So I think like this is good, and now we can start with the inheritance. Let me comment all this. Okay, so we can start with the inheritance. So I'll tell you like what is inheritance first. Inheritance is basically now we have already shown you like what is class. Okay, so now जब आप प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ आपको. तो जब आप भी प्रोजेक्ट बनाने होंगे लाइक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप प्रोजेक्ट बनाओगे मतलब बड़े प्रोजेक्ट भी बनते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज आप एक क्लास में सब कुछ नहीं कर सकते. ओके, so we have to disintegrate your code, okay, your in like many classes. So here like we use these properties which helps us to make a project scalable or extensible. Okay, so now I'll give you an example. So I'll tell you first what is inheritance. Okay, so suppose there are two classes. Now if you want to inherit the properties from one class to other class, at that time inheritance is used. Suppose there is class A and there is okay, and there is class B. This class A has some properties like some name is defined here, and class B age is defined here. Okay,
But what we want is like class B should have properties of class A also. Okay, like a parent child relationship also. Class A is parent, and now class B is parent. Okay, this B is child of parent A. Okay, now as A is parent of this B, so it should have properties. उसके पास properties होनी चाहिए B के पास के पापा की वगैरह की कोई भी है तो parents की, तो it should have properties as name. It will have its own properties. Age तो होगी इसके पास तो name भी होगी. So here, like inheritance, we use inheritance. Okay, I'll show you the structure, how we define it in Python. Okay, just 1 minute. Hmm. Suppose this is one class, class A, and we can define some like normal function in it. Basically, this is a constructor where we can define some variable. Okay, so what I'll do, I'm defining the name only as given as example. Okay, and whatever the name we will be getting, like, so we can put it as here only. Okay, so now this is a constructor. Whatever the values we will be passing from while making an object, हम जो भी value pass करेंगे for this name, so it will put into this, so it will initialize this variable. Okay, and we can have one class also, normal class B. Now we know what we want. We want to inherit the in this class we want to inherit the properties of class A. So how we will define that? Like okay, this passing this class A reference into this B as a like inside like as a parameter. So what we will do, like we will be able to inherit all the properties of A. Okay, so this is like a constructor of B, and suppose like we have some age A here, and we can define self dot age whatever we'll be getting here. Okay, uh okay, and now as this is the parent of that this B. So okay, I'll tell you one more thing, like just let me complete this one. A dot and uh, what will be getting name, we get past that name. So here there is one good thing. So whenever now you want to initialize class A also. Okay, so जब आप ये B को call करोगे, you will be able to pass all the variables to class A also. You will make the object of that also. So I'll show you how, like B, and now this constructor what it asks, name, it इसको name चाहिए and age चाहिए. So we can pass some name, some text we can give them, and age too. Okay, so essay like using this we are able to make an object of this class. Okay, and here what we are doing, like we are okay, so this is what we are doing here, as we have already inherited the properties of A. Okay, in this B, so we can pass that properties to we can basically initialize the A also while initializing the B. तो हम इधर क्या कर रहे हैं, इधर हम A का constructor call कर दे रहे हैं, and we are passing what it is asking, name basically. Okay, so so we have already define this, and we can just first check like while making a class, and we can check what it is showing here. Okay, so this is name that we are passing, and we are okay, let me run this once. Okay, what it is showing. So yeah, okay, so what it is showing, okay, it is showing that this B, um, this B, okay, so we have what we have done, like we have initialized the constructor with test and 2, but we have already passed name. Now somebody has asked the question that why we are passing self everywhere, but why we are using that self. So self is basically having self, what self is, self के पास इसका क्या होता है, इस क्लास का रेफरेंस होता है और इसके सारे वेरिएबल्स का. ओके, तो हम जब भी सेल्फ यूज कर सकते हैं, तो हम सेल्फ यूज मतलब अब इसके पास पूरा रेफरेंस इस क्लास का, तो इट कैन हैव इट्स वेरिएबल्स आल्सो, तभी हम सेल्फ यूज करते हैं, एंड वी हैव टू पास द सेल्फ आल्सो एट दैट टाइम. नाउ
सेल्फ हमें कहाँ हेल्प करता है? सी दिस इज ऑल्सो वेरिएबल बी एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल नेम, दिस इज अ क्लास वेरिएबल एंड दिस इज अ इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल बेसिकली द ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो सेल्फ हमें इधर हमें डिफरेंशिएट करने में काम आता है। जब भी हम सेल्फ डॉट एज करेंगे इसका मतलब भी हम क्या एक्सेस कर रहे हैं? क्लास वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। एंड नॉर्मली जब हम ये वाला यूज करेंगे बी, दैट इट मींस अ इंस्टांस वेरिएबल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस दैट I want to show, where we are so like somebody has asked this question, why we are using self everywhere. Okay, so this is a difference, and you can see like so print b. Okay, so what we are like, we have printed a b, and this b object is printed now. Okay, so this is how like we have inherited, and now we can check some properties of it. B dot, and what we can check? We can check first name. Oh, let's first like check. Now as we have initialized the B object only, हमने B object ही बनाया था, तो पहले B की check करते हैं properties. RVR. So you can see like what we have passed the age as 2, so we are getting the age. Okay, so हम उसको print करें, and we are able to access this also because this is a public variable. वो public variable है age, तो हम we are able to access this. Now the next thing is name. अब हमने B, A की properties B में get करी हैं, तो now we have to see कि हम उसकी properties को हम print access कर पा रहे हैं या नहीं. Okay, name. ओके कूल. सो हमने क्या किया था? बी का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी उसमें, एंड वी आर एबल टू सी दैट यस हम उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पाए प्रॉपरली। हमने बी के ऑब्जेक्ट से हमने नेम इधर पास किया था, बी का ऑब्जेक्ट में नेम पास किया था, बट वो नेम कहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है? ए में, एंड हम ए का कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बी से, ठीक है ना। तो हम इधर, और हमने इनहेरिट भी किया था, दिस इज द मेन थिंग, हम इधर इनहेरिट कर रहे हैं बी ए की प्रॉपर्टीज को बी में। तो नाउ वी आर एबल टू access that variable. Okay, cool. I think like so this is like a basic thing, like how we do the inheritance in the Python in Python, basically Python language. Okay, so we have like some types of inheritance. I'll, I'll show you some types. So like there is one type of inheritance, that is multi-level inheritance. There is other type of inheritance that we can multiple inheritance. Okay, multiple inheritance. Yeah. So I'll show you some example of this also. Suppose like we have a class A. Okay, I'll and like okay, we have defined a unit. Suppose we just define a variable A. Okay, and okay. So I'm not using the same variables. It can create confusion also. So I'm just taking a temp of A. And remember, Mohit has already told Python is a snake case language. So it's good if we use snake case everywhere. So sometimes we use this like as this type of language. So this is a camel casing which should not be used. Okay. Now I'm defining a class B. So define init. We can have temp A. We can have temp B. And inside this, like first what we call, as I've already shown you, like what we do like inheritance. We call the concept of the parent class like a super. हम जावा में हमारे पास होता है, जैसे हम सुपर कॉल करके करते हैं, हम पेरेंट के वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाते हैं, तो सिमिलर इन पाइथन आल्सो। सो हम इसको ऐसे कॉल करते हैं, एंड हम उधर क्या भेजना है? हमें टेम्पे भेजना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पास टेम्पे। ओके, और हमें इधर हमके इधर क्या क्या है? हमारा इधर खुद का वेरिएबल है सेल्फ बी, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे इनिशियलाइज। ओके, एंड अगेन दैट थिंग लाइक हमें सेल्फ अगेन पास करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। दैट्स व्हाई लाइक इट विल बी एबल टू बेसिक pick that variables, उस क्लास के वेरिएबल्स को पिक कर पाएगा, उस क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस। नाउ सी and what we will do. Okay, so you can see here a um, A was the parent, then B was child, then B's child is C. Is basically parent, child, grandchild. Okay,
एंड व्हाट वी आर डूइंग, ए की प्रॉपर्टीज थी, पेरेंट था, बी की प्रॉपर्टीज में हमने ए की प्रॉपर्टीज ले ली चाइल्ड में, ओके। अब ग्रैंड चाइल्ड में हम बी की प्रॉपर्टीज तो आएंगी आएंगी, बट बी में ए की प्रॉपर्टीज थी, तो अब सी में क्या होगा कि बी की तो आएंगी आएंगी, ए की भी आ जाएंगी, क्योंकि बी में ए की भी प्रॉपर्टीज थी। तो इवेंचुअली ये सी सबकी प्रॉपर्टीज ले लेगा क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड है। एंड सिमिलरली वी विल डिफाइन दिस इन इट, we can have temp also, like the variables mb and temp c, okay। and similarly we just know, अब हम क्या कर रहे हैं, सी को हम खाली बी का एक्वायर कर रहे हैं, तो हम बी वाला ही इनिट कॉल करेंगे, ओके। एंड बी विल टेक केयर ऑफ इट्स पेरेंट self, and what we will pass, it will ask for two parameters, so we have to pass that two parameters। और सिमिलरली अब इसका जो खुद का पैरामीटर है, क्योंकि खुद की प्रॉपर्टीज भी होंगी सी वाली क्लास पे, वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे टेक्स्ट, ओके। So this is something, this is called like a multi-level inheritance, okay, because multi-level A to B to C, yep। Just 1 minute, I think somebody has put some, but you can just check that question। Okay, cool, I think then we can just check this class, like it is showing something okay, so I'll tell you, like you might be having some question around this also कि इसके अंदर यार ये अंडरलाइन क्यों आ रहा है। तो पाइथन का कुछ एक कोडिंग कन्वेंशन होता है। तो हमें क्या होता है कि एक क्लास दो क्लास के बीच में अगर जो हम एक, वैसे तो देखो बेसिक चीज क्या है कि एक क्लास की एक फाइल होती है। अभी हम तुम्हें समझाने के लिए एक ही फाइल में क्लासेस बना रहे हैं, क्यों, इजीली समझ आए जल्दी सब कुछ, ठीक है। अब अगर अब पाइथन की कन्वेंशन क्या है कि अगर जो तुम एक ही फाइल में दो क्लास बना रहे हो, तो इट शुड हैव अ टू स्पेसेस गैप, ओके। सिमिलर इन दिस, अभी वन वन स्पेस था तो वो इसलिए इशू दे रहा था। अब अगर जो हम दो फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन के बीच में सिंगल लाइन गैप होगा, ठीक है। तो वो वाला मतलब ऐसे ऐसे कन्वेंशन है। तो हम अभी आके यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम यहाँ से सब कुछ पास कर देते हैं, 1 2 3, लेट्स पास कीप दिस वेरिएबल में, ओके। और बेटर व्हाट इफ वी पास समथिंग गुड, okay, so we are passing something good, parent child child, okay। now let's see कि हम सी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब अब इसमें मैं तुम्हें ऊपर से दोबारा से बता देता हूँ, ए की प्रॉपर्टीज थी, ए इज द पेरेंट, बी को हमने बी में हमने ए को इनहेरिट किया, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी बी में, ठीक है। और हमने बी का कंस्ट्रक्टर जब हमारा बनाया, तो हमने ए का भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी हमने वहां पे भेज दी, ठीक है। और जब हमने अब सी बनाया, तो सी में हमने क्या किया, बी को इनहेरिट किया। अब हमने जब बी का कंस्ट्रक्टर बनाया था, जब, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तभी ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसका, जब कंस्ट्रक्टर होगा। तो हमने उसके कंस्ट्रक्टर बनाते हुए अब हमने बी को भी इनहेरिट कर रखा था, तो हम बी को कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज वो मांग रहे हैं, वी हैव टू गिव दैट आल्सो, ओके। और हम जो सेल्फ जो हमारी सी की प्रॉपर्टीज है, वो तो हम इनिशियलाइज करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, सी का कंस्ट्रक्टर बनाया, एंड वी हैव जस्ट पास्ड सम डिफरेंसेस कि आपको पता लग जाए, ओके। हम यहाँ पे क्या हुआ देखो, आप मेन डॉट सी, वी आर एबल टू मेक दैट सी ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब आप हम इधर क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक कि अब सी के अंदर ए की प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने देख लिया था कि ए और बी को हमने देख लिया इनहेरिटेड, और उसका हमने बिहेवियर भी चेक कर चुके हैं कि ए की प्रॉपर्टीज एक्सेस हो रही है, फिर बी की प्रॉपर्टीज भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और बी से हम ए की भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख रहे थे, तो हम देखते हैं कि स्किप प्रॉपर्टीज हम एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। स्किप प्रॉपर्टीज मतलब कि सी से हम ए की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएंगे या नहीं, ठीक है ना। तो सी डॉट, अब हमारा वेरिएबल का नाम क्या था, ए था, ठीक है ना। तो हम सी डॉट ए एक बार चेक कर लेते हैं, सी। अब हम सी में क्या है कि सी पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी आती हैं। हमने क्या उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी थी, पेरेंट, जस्ट टू शो यू, ओके। ए की प्रॉपर्टी देखो, टेम्प पे है, और टेम्प पे हमारा कहाँ पे इनिशियलाइज सेट हो रहा है, यहाँ पे ए के अंदर। तो और हमने क्या इधर एक्सेस किया, सी डॉट ए। तो आप देख रहे हो कि हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर लिया इसे, और हम सी से ए की प्रॉपर्टीज प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर देयर इज मल्टीपल इनहेरिटेंस,
Okay, I should this one. This it will give you this one. Okay. Now, okay, we have to define multiple inheritance. No, yes, this one is okay. So multiple का we can have give you first example. पहले मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद हम उसको देखेंगे, उसको देखते हैं कि कैसे चलता है. ठीक है, सपोज यार हमारे पास ए क्लास है. ठीक है, अब हमारे पास एक बी क्लास है सेम लेवल पे, मतलब ए के दो चाइल्ड है बी और सी. ठीक है ना. नाउ वी हैव डी क्लास आल्सो. ओके, अब क्या है कि ए के ए के पास जो प्रॉपर्टी, अब हम क्या करते हैं बी के अंदर ए को इनहेरिट करते हैं और हम सी के अंदर भी ए को इनहेरिट करेंगे क्योंकि सी उसका पेरेंट है. अब इधर क्या होता है कि कई बार सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है जो हम एक्सेस करना चाहते हो है बी के अंदर भी और सी के अंदर भी. ठीक है, और वो हम एक्सेस कहाँ से करते हैं, क्योंकि हमने अब डी के अंदर हमें इनहेरिट करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है. अब सिंगल इनहेरिटेंस नहीं है. मल्टीपल में क्या होगा कि अब इसके अब जैसे मम्मी पापा हो सकते हैं. ठीक है ना, तो ये दोनों पेरेंट्स हैं, तो हमें दोनों को हमें यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा. मान लो हम बी को भी करते हैं इनहेरिट और ए को भी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल या ऐसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं. हम क्या करते हैं कि जो जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे उसके बाद हम ब्रैकेट में पहले हम सिंगल जो भी पेरेंट होता था उसको हम डिफाइन करके उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते थे. अब मल्टी लेवल में क्या होगा, हम उसको कॉमा करके हम उसके मल्टीपल क्लास बेसिकली मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं. बट इसमें इशू क्या आता है कि कई बार हम ना प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर पाते, इधर एम्बिग्यूटी हो जाएगी. अब मान लो दोनों की इधर हमारे पास सेम फंक्शन है. ठीक है ना, तो हम उसमें क्या होगा कि अब उसको समझ नहीं आएगा यार इस वाले से लूं या इस वाले से लूं. ये सी प्लस प्लस में आपने पढ़ी होगी. ठीक है ना, डायमंड प्रॉब्लम होती है. तो हाउ पाइथन इसको रिजॉल्व कैसे करता है. पाइथन विल सी कि यार अब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस पता लग गया कि हम बी कॉमा ए करके या ए कॉमा बी करके जैसे भी करना है आपको, और यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं ऐसे. और इसमें डायमंड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन आता है आपका, उसका भी मैं बता देता हूँ कि पाइथन उसको कैसे रिजॉल्व करता है. जैसे आपने इसको बी कॉमा ए को आपने इनिशियलाइज किया है कि हाँ पहले हम बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेंगे फिर ए की इनहेरिट करेंगे डी के अंदर, तो पाइथन क्या करता है ऑटोमेटिकली उसको, अब कोई भी फंक्शन कॉल करोगे ना जो भी कॉमन होगा बी और इसमें, सॉरी इट विल बी सी. इट विल बी सी नॉट ए. ओके, क्योंकि वही इसके जो इमीडिएट पेरेंट्स है वो बी और सी हैं. ठीक है, और बी और सी के ए हैं. तो डी के अंदर अब जो भी मान लो इसके अंदर दोनों सेम फंक्शन है सेम बी के अंदर भी सी के अंदर भी, तो डी अब तुम एक्सेस करोगे ना इस फंक्शन को तो उसको पता नहीं चलता, कई बार एम्बिग्यूटी आ जाती थी. तो इसमें क्या करेगा वो, जो बी के अंदर जो सबसे पहला पेरेंट इनहेरिट होगा वो उधर से उसका बिहेवियर गेट कर लेगा. तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ए है और बी और सी दो चाइल्ड है. अब बी भी ए का ही चाइल्ड है, सी भी ए का ही चाइल्ड है. ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं कोड को, और शुड बी राइट अगेन. ओके, लेट मी राइट अगेन ओनली, इट विल बी गुड फॉर यू, इजी टू अंडरस्टैंड. क्लास ए we can have defined internet. Okay, and we can define internet and what I'm doing. We can normally, what should I do? We can normally just print something self dot a. Suppose this is parent. Okay, this is parent. Let me define the class B as well, which will be the parent will be A. I'm defining the constructor of this class. It will be self. We have to like always also it will take self also. Okay, 15 minutes will take 10-15 minutes. Okay. By 10:30 will be for all that. ठीक है, cool. I think like कुछ queries आई हैं कि मतलब it's taking too long, तो ठीक है, we'll मतलब just continue for 15 minutes also and
तो आई एम ट्राइंग कि आपको यार अच्छे से समझ आए सब कुछ, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। जब आप मतलब आगे भी काम करोगे तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिजाइन में काफी काम आता है। तो सेल्फ एंड हम बेसिकली उसका हम कॉल कर सकते हैं, एंड वी कैन self dot be something we can have here. Okay, and we can child, and we can name it as child one, I think. Yeah, let me copy this. C, its parent will be a only. So you can see this is child two. Okay, and as we are inheriting a behavior, so like we have to call that a only. And so let me just suppose there is class t. Okay, but now it does b comma bc. So this is multiple inheritance. We are able to inherit two class properties at once only. ठीक है ना, एक ही बारी में हम दो क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर पा रहे हैं, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. Okay, and what I'll do, like I'll simply just like not doing anything here, like this one, base one. Okay, so we just have to, and you can see the signs also, like it means like these are inherited. Okay, and b dot init. Okay, and just pass the self only. We are not asking for any parameters. Yes. So same for this, just pass the self only. Okay, and for this one, okay, like we can have some self dot p. This is gradient, something like that. Okay. So let me make a object of d. Okay. Okay. Object. We have made an object of d, and we have to see if we are able to make the object of d. तो ठीक है यार, ये देखिए आई थिंक ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऐसे एग्जांपल मिल जाएगा आपको, और ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है. ए इज द पेरेंट ऑफ ऑल, बी और सी उसके चाइल्ड है ए के, एंड डी, देन डी, डी के दो पेरेंट है बी और सी. तो वो बी और सी की प्रॉपर्टी ऐसे इनहेरिट करेगा. और एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव करेगा, जब भी इन दोनों का जो भी मतलब उसका फंक्शन गेट करना मतलब एक्सेस करना चाहेगा, तो वो बी का ही प्रॉपर्टी उसको दिख जाएगी. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इट इज मेकिंग, इट इज वर्किंग कूल. आई थिंक हमने हमारा डी का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारी अचीव सक्सेसफुल हुई है, मतलब इट इज अचीव्ड. नाउ वी हैव टू सी. ओके, लेट मी मेक सो. ओके, just 1 minute. What can be done? Just 1 minute. Define, suppose there is one function m2. Okay, let me print, let me print. Some, I'll print that child one only. So it is asking for static only because we are not using like any of the variables. Okay, like it is already got one only, so just copy the basic only. Okay. Guys, I know we have been over time for 8, 10 to 15 minutes, but we will take like 15 to 20 more minutes, and we will cover inheritance and polymorphism, and that's what is planned for today. I hope you guys it's not a problem for you guys. एक्चुअली हमें कुछ फीडबैक में आए थे कल की, या थोड़ा सा हमें डिटेल में समझाना था आपको, तो हमने बस उस चीज के लिए थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह. एंड ठीक है यार, आप ये देख लीजिए, हमने यहाँ क्या किया, अब हमने m2 वाला फंक्शन कॉल किया. हमने क्या किया था, डी में बी और सी को इनहेरिट किया था. अब बी में भी हमारे पास m2 फंक्शन है, और डी सी में भी हमारे पास, जो बेसिकली उसके दोनों इमीडिएट पेरेंट्स है, दोनों के पास m2 फंक्शन है. ठीक है ना. अब वैसे तो एम्बिग्यूटी आ जानी चाहिए थी डायमंड प्रॉब्लम के हिसाब से, लेकिन हमने बी और बी को हमने यहाँ पे फर्स्ट इनहेरिट किया था, बी कॉमा सी. तो हमने जब हम डी में डी से हमने m2 को एक्सेस किया, तो इसने चाइल्ड 1 को प्रिंट किया है, विच इज द फर्स्ट पेरेंट. तो वो पहले वाले पेरेंट का चाइल्ड बी को उसका मतलब उसको कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया. तो उसकी प्रॉपर्टी ये है जो फर्स्ट पे पहले डिफाइन हो. ठीक है ना.
So this is like how we close the inheritance thing, and we can come to polymorphism. Okay. Okay. Cool. So so polymorphism is basically um, okay. So polymorphism is basically I'll tell you. So we have a single interface only, but for that interface only, like we have different classes. Okay. So basically different functionalities होती हैं same class के लिए. I'll try. बीच में add on कुछ. So, guys, if that makes more sense to you, is let's say you are a friend to someone, you are basically a brother, you are a sister to someone. So you behave differently with everyone, right? At any particular time. So you might behave differently in front of your father, or अपने भाई के सामने तुम अलग बिहेव करोगे. सो एक सेम पर्सन का अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग बिहेवियर करना, वो ही पॉलीमॉर्फिज्म है. तो अगर तुम समझना चाहो एज ए एग्जांपल, तो इवन अगर तुम लोग इंटरव्यू में जाओगे एंड तुम लोग वहां पे तुमसे कोई पूछेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डेफिनेटली डेफिनेशन तुम लोगों को तुम लोग पढ़ के ही जाओगे. बट अगर तुम उन्हें थोड़ा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करोगे कि taking you as an example कि I am a brother to someone or I am a sister to someone and मेरा बिहेवियर हर किसी के साथ अलग अलग, या फिर तुम्हारा डॉग है तो डॉग का बिहेवियर मदर के साथ अलग है और तुम्हारे साथ अलग है, सबके साथ अलग है. तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है. हर किसी एक ही सेम ऑब्जेक्ट का हर अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग बिहेवियर होना, दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज अबाउट. ओके. And while Arya is creating some example for you, I'll just tell you we have two type of polymorphisms. So one is basically runtime polymorphism, another one is compile time polymorphism. Uh, Alternately known as, so compile time polymorphism is also known as method overloading, and runtime polymorphism is also known as method overriding. Right. So, while the name of this itself, if you hear it, method overloading, it is saying that we are basically adding extra things to it. We are overloading things. Like we had some things, now we are adding extra, 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 extra. Right. So that is basically overloading, and just show you example for both overloading and overriding. uh, so I hope the definition make sense to you guys. Yep, I'm just almost completed, guys. So okay, so I'll complete it. Like I'll tell you about the compile time polymorphism and what does that mean? What does that terms means? अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? तो यार compile अभी दो polymorphism में क्या होता है कि just we have to show the different behaviors, okay, same चीज के. Like अभी okay, एक फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है, ये मैं नॉर्मली एग्जांपल ले सकता हूँ. बर्ड है, जैसे अब बर्ड्स के डिफरेंट बिहेवियर हो सकते हैं. एक बर्ड है स्पैरो, वो उड़ सकती है. ऑस्ट्रिच वो उड़ नहीं सकती, ठीक है ना? तो अब कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? कंपाइल टाइम में यार, जब नाउ यू नो दैट कि जब आप भी कोड लिखते हो तो यू हैव टू रन दैट कोड, आप उसको कोड को रन करोगे. तो अभी क्या है कि अभी जैसे ये इश्यूज हैं जो आपको ये अंडरलाइन दिख रहा है, ये क्या है कि हमारा जो कंपाइलर है इसका पाइथन का या इंटरप्रेटर है, वो आपको उसी टाइम पे बता रहा है कि दिस इज द प्रॉब्लम. जैसे मोहित ने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया था तो दैट प्राइवेट वेरिएबल वाज नॉट एक्सेसिबल, तो उसमें वो अंडरलाइन आ जा रही थी कि दिस वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल. तो दैट इज कंपाइल टाइम. कंपाइलर ही आपको बता दे रहे थे इसमें कुछ इशू है इस कोड में. और एक रन टाइम तो बेसिकली जब भी ओवरलोडिंग होगी, अब मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो आपके पास ये क्लास है, ठीक है ना? अब आप इसके अंदर ही एक और फ्लाई फंक्शन बना लेते हो, ठीक है ना?
अब इसके अंदर भी सेल्फ ही है मेथड का पैरामीटर्स, और कोई पैरामीटर ही नहीं है। तो इसने क्या बोल दिया कि यार अब दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। आप क्या कर रहे हो, सेम फंक्शन से दो मेथड बना रहे हो, बट हाँ हाँ, बट उसके अंदर क्या है कि यार दोनों फंक्शन के मतलब पैरामीटर वो सेम है, पैरामीटर इसको सिग्नेचर्स बोलते हैं, तो सिग्नेचर सेम है। बट अगर जो आप इसको ऐसे कर दोगे, तो इसमें क्या होता है कि अब इस केस में क्या होता है कि इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस केस को बोल देते हैं मेथड ओवरलोडिंग बोल देते हैं इस केस को। और इसमें क्या होता है कि इसमें इशू नहीं आता, और कंपाइल टाइम पे ये मतलब कर देता है, रन कर देता है। तो उसके बाद अगर जो आप मान लो जैसे ऑस्ट्रिच का ऑब्जेक्ट बनाते हो आप आगे ओ, और आप बोलते हो फ्लाई, ऑस्ट्रिच का ऑब्जेक्ट बनाते हो, और मान लो कोई भी फ्लाई का ओ इज इक्वल टू ऑस्ट्रिच, ओ इज इक्वल टू ओस्ट्रिच। आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो और आपने इसके अंदर कुछ वेरिएबल पास, ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, और आप ओ डॉट फ्लाई के लिए बोलते हो, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, मान लो कि यार यू हैव टू पास समथिंग 10, कितना हाइट तक मतलब उड़ना है 10, ठीक है ना। अब क्या करेगा वो, ये वाला फंक्शन कॉल करता, क्योंकि हमारे डिफरेंट सिग्नेचर्स है। अगर जो आप इसमें क्या करते ओ डॉट फ्लाई और इसमें आप कुछ पास नहीं करते, तो वो वाला फंक्शन नॉर्मल हमारा जो भी ये वाला फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, वो बोला हाँ, मैं एक बार बस इसको पूरा करना पड़ेगा, देन आई मेक इट गो थ्रू ऑल दिस, ठीक है ना, तो वो चल जाता। जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट मैं आपको नॉर्मल पॉलीमॉर्फिज्म दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस कंपाइल हम एक बार वर्ड का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डॉट प्रिंट, ओके, सिंबल इज इक्वल टू स्पैन एंड फॉरवर्ड ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच प्रिंट डॉट, ओके। एक बार इसको, ये ठीक है यार, ये कोडिंग कन्वेंशंस के इश्यूज हैं, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस यूजिंग दिस एंड बड़ा, हाँ और कुछ ठीक है। तो एंड दिस इशू इज बेसिकली दिस इज आल्सो कोडिंग कन्वेंशन, लाइक इसको आप क्लासेस शुड बी डिफाइंड बाय लाइक दिस, स्टार्ट विद द कैपिटल के समथिंग, ओके। सो and now similarly we have to change here also, okay. So what you can do, like when you will run this, so you will see different behavior, you this same way, okay. So you can say here, uh, okay, we have some print statements also, okay, in this, in here also we have print statements one attached. First of all we'll see हमने क्या करा है, yep, just हमने नॉर्मल अभी क्या करा है यार, जस्ट आई मेड दिस वन, हाँ दिस ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसमें कोई इशू नहीं है अभी तो यार, ठीक है। अब व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट बी डॉट, पहले इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं, बी डॉट फ्लाई का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नॉर्मल हम फ्लाई कॉल कर रहे हैं, और ये प्रिंट हो जाना चाहिए, सम बर्ड्स कैन फ्लाई, ओके। तो ये क्या है, ये वन बिहेवियर हो गया कि वो बर्ड फ्लाई कर पा रही है, ठीक है ना। अभी I'll tell you the second one also, s dot fly. I'll show you one. There is one catch also in this. I'll tell you why that also. Okay. So sparrows can fly. Now what you have done. Now since that that bird is inherited also, but first what it will do, it has like printed this sparrows instead of this, because see इसके पास दोनों फंक्शन है, ये वाला फ्लाई है, ये वाला फ्लाई है। एज हमने इनहेरिटेंस में देखा, बर्ड को हमने क्या करा है, प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी स्पैरो में, तो दोनों फंक्शन उसके पास एक्सेसिबल है। लेकिन उसने कौन सा प्रिंट करना मतलब हमने जब एस को फ्लाई बोला कि कॉल मतलब प्रिंट कॉल करो बेसिकली फ्लाई के लिए, तो उसने यही वाला करा खुद का, तो इसको बोलते हैं ओवर राइटिंग, फंक्शन ओवर राइटिंग।
तो इसको बोलते हैं, एक सेकंड बस, एक सेकंड मैं इसको लिख भी देता हूँ तो इजी रहेगा इनके लिए। तो ये ओवर रिटर्न फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी इसकी पेरेंट क्लास में है, लेकिन हमने इसको दोबारा इसका हमने बिहेवियर एक्सप्लिसिटली बताया कि नहीं ये वाला यूज करना है। तो गाइस ऐसा है कि जैसे बर्ड का, हर बर्ड का क्या है फ्लाई के लिए कि एवरी बर्ड, हर बर्ड फ्लाई कर सकता है, बट स्पैरो के केस में और किसी और बर्ड के केस में हो सकता है कि वो फ्लाई के, सो दिस इज ए मेथड ओनली। तो इस फ्लाई मेथड में हो सकता है हम कुछ और कर रहे हो, राइट। तो हर बर्ड एक फ्लाई स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, दैट इज ट्रू। बट हो सकता है स्पैरो फ्लाई के साथ ये भी प्रिंट करे कि भाई आई एम स्पैरो, राइट। तो इसीलिए हमने उसको ओवरराइड करा है। तो हमने यहाँ पे बोला कि स्पैरो कैन बेसिकली, तो ऊपर वाला मेथड जब हमने इसको दोबारा डिफाइन करा, सेम मेथड सेम नेम से सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ, व्हेन वी डिफाइंड इट, तो उसने क्या करा, जो पहले वाले मेथड था उसको हटा दिया और उसकी जगह नए वाला मेथड जो हमने अभी डिफाइन करा विद द सेम नेम उसको यूज कर लिया। तो पहले हमारे पास ये था, तो उसके बाद अब क्या हुआ, हम दोबारा अगली क्लास में जब हमने इस क्लास को बेसिकली इनहेरिट किया, नाउ हमने सेम मेथड दोबारा लिख दिया। तो इसको पता लगा कि अच्छा पहले यहाँ पे ये था पर इन्होंने अब दोबारा लिख दिया है, तो अब मेरे को जब भी कोई बोलेगा ना कि फ्लाई को कॉल करो तो मैं इसको चलाऊंगा। बट आप लोग ये कह सकते हो कि अरे यार फिर ये वाला मेथड तो कभी चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करता, लेट्स से कि अगर मैं इसको हटा दूं, मेरे पास ये मेथड ही नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे वर्ड को यहाँ से करा है, एंड अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्पैरो को रन करूं तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास एरर। हाँ, अरे यार इनको वो करना पड़ेगा। ओके, जस्ट 1 मिनट यार, इसको हटा ही देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, बट इट विल शो एरर। जस्ट 1 मिनट यार, कुछ एक इसके अंदर डाल देते हैं। सेल डॉट, ठीक है, अभी बेसिक है। अभी इसके अंदर क्या फ्लाई फंक्शन नहीं है, फ्लाई हमारा है, अब हमारा क्या है, बर्ड इसमें इनहेरिटेड है लेकिन इसमें फ्लाई फंक्शन है नहीं, करेक्ट। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, स्पैरो को बोले भाई उड़ जाओ फ्लाई, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं, सी, तो इसने जो बर्ड के थी फ्लाई फंक्शन, अब वो वाला कॉल कर दिया। अभी आप लोग ये पूछ सकते हो कि पहले एरर आ रहा था, पहले एरर क्यों आ रहा था? पहले एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि इसमें अभी कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं था, तो इसीलिए वो एरर दे रहा था। बट हमने जैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा तो उसके अंदर उसे पता चला कि ठीक है अब कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, बट जैसे अभी रजत ने यहाँ क्या करा, रजत ने लिखा कि कुछ भी वैल्यू असाइन कर दी। अगर मेरे को चाहिए होता कि मेरे को कुछ भी नहीं करना, मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूं, बट मेरे को उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आई जस्ट वांट ए कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी ना करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पास यूज करता हूँ। पास इज ए कीवर्ड, जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है तो जस्ट राइट इट पास एंड इट विल रन लाइक द सेम, सिमिलर तो टू कंटिन्यूअस। करेक्ट। तो अभी क्या हुआ, अगर यहाँ पे फ्लाई मेथड होता तो क्या करता, वो बोलता कि स्पैरो के पास अपना फ्लाई मेथड है तो वो अपना कॉल करेगा। अभी उसने बोला कि स्पैरो के पास तो फ्लाई का मेथड ही नहीं है, तो उसने क्या बोला कि अच्छा बर्ड के पास तो हो सकता है ना, तो उसने बर्ड के पास चेक करा। बट अगर बर्ड के पास भी फ्लाई मेथड नहीं होता तो ये एरर थ्रो कर देता, क्योंकि हमारी जो बिल्कुल पेरेंट क्लास है उसके पास भी मेथड नहीं है, हमारी जो स्पैरो क्लास है उसके पास भी मेथड नहीं है, किसी के पास भी वो मेथड नहीं है, तो वो एरर थ्रो करेगा। गॉट इट, ओके। तो आई थिंक लाइक दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यार यही है आई थिंक, हमारा क्या होता है इसमें कि वी हैव डिफरेंट फंक्शंस। अब देखो प्रॉपर्टीज वही है, उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, बर्ड के स्पैरो के पास बर्ड की भी है, खुद की भी है, खुद मतलब ऑस्ट्रिच के पास जैसे खुद का फ्लाई भी है, बर्ड का भी फ्लाई है क्योंकि उसने इनहेरिट कर रखा है। लेकिन हाउ इट इज यूजिंग, हाउ इट इज कॉलिंग दैट फंक्शंस और हाउ इट इज मतलब यूजिंग दैट फंक्शंस, वो जो बिहेवियर है इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं कि इट कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स, ओके। आई थिंक तो गाइस आज के लिए आई थिंक यही टॉपिक्स हमने सोचे थे कवर करने के लिए, एंड सो आई होप यू गाइस हैव लर्न। आई कैन गिव यू लाइक अ जस्ट कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो यार आप भी थोड़ा पढ़ के आ जाना उसके बारे में, मैं आपको लिख भी देता हूँ शायद। एक सेकंड चलो, जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि तो व्हाट इज क्लासेस। गाइस ये जो पाइथन की फाइल है, लाइक ऑलरेडी सम पीपल हैव आस्क्ड इन द चैट कि बैसाखी हैज आस्क्ड दैट इफ वी कैन शेयर दैट फाइल।
We will definitely share you this file. You can uncomment the classes and you can try to run it again and you can see, okay, if there is any error or not. So you can try running it again. And if you feel you have any issues, you are facing anything that we taught you and you are not able to replicate it, then do ask in Q&A. We will definitely respond to that and you can basically then try and we will give you example there in Q&A itself. You can just copy paste that example and try to run it, and I think you will be able to resolve that issue. So I think guys we are over by 30 minutes, but I hope the session made sense to you. And if it made sense to you, if it not did not made sense to you, which topics did not made sense to you, please fill a uh, feedback form and we will try and see if we can squeeze the topics from yesterday, today, or tomorrow. If you have not understood, we'll try to squeeze the topic in some time on the weekend so that when we will have some extra time. So that you can also basically understand those topics from the scratch. एक और चीज यार, कल की क्लास इंटरेस्टिंग है, कल की क्लास में मशीन कोडिंग प्रॉब्लम बताएंगे एंड दैट इज हम उसके बिल्कुल उस वे में बताएंगे कि दैट इज बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यूज कि अपने इंटरव्यूज में कैसे अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को। तो अभी आपका ये क्लासेस कैसे बनानी है और बेसिक्स क्या है, आई थिंक अगर आप लोगों ने पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे कैसे पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस सिंपल क्लास कैसे बनती है। कल हम आप लोगों को मशीन कोडिंग प्रॉब्लम्स एक सॉल्व करवाएंगे एंड टू एंड। सो मशीन कोडिंग इज बेसिकली द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू इन मेनी कंपनीज. Flipkart asks it, Walmart asks it, then Pay asks it, Grow asks it. A lot of big tech companies ask machine coding problem. So there you have a defined problem, and then you have to basically come up with the solution yourself. You don't have, you don't have a problem as such is that the array will be there and you have to solve something. It's not DSA, but it is machine coding end-to-end problem where you need to use your exception handling, you need to use your classes, you need to use your oops concept and everything. So tomorrow we are going to do a basically machine coding problem. So I hope you guys will join and दैट विल बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन। अभी बहुत मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि बेसिक्स हैं, आते भी होंगे नहीं भी, बट कल से बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सो आई लाइक हम ट्राई करेंगे कि आप सारे आओ तो मजा आएगा, मतलब अच्छी तरह आपको बताएंगे कि कैसे इंटरव्यूज में होते हैं सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक वी कैन क्लोज, इट्स ऑलरेडी thank you guys. It's already 40 minutes over. I think. Cool. Bye guys. Bye guys. Yeah.